So welcome everybody. This is Sanjeev Mishra, and today आज हम क्यों इकट्ठे हुए, क्यों इतने एक्साइटेड हैं, क्यों सब इतने खुश दिख रहे हैं, क्योंकि एक चाइल्ड मिडवीक मैजिक क्लब उसने 1 साल पूरा किया है आज। ये रैपिड माइल का चाइल्ड है। रैपिड माइल, मैं देख रहा था ग्रुप में कई लोग रैपिड माइल का बर्थडे समझ रहे थे। रैपिड माइल इज ऑलरेडी एडल्ट, 20 years old हो चुकी है। This is a kid. So we are really celebrating this. So आज 1 साल पूरा हुआ इसको। तो लास्ट ईयर से 1 साल तक की जर्नी बहुत अच्छी रही। सबसे अच्छी बात आप लोगों की कंसिस्टेंसी ने इन सारे ट्रेनर्स को मोटिवेटेड रखा कुछ खुद नया सीखने के लिए। तो सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस। रैपिड माइल से ज्यादा आप लोग हकदार हैं इसके। तो सबसे पहले मैं आप लोग के लिए क्लैप चाहता हूँ। खुद के लिए खुद भी करें और हम भी आपके लिए करें। तो एज ए रिचुअल, रैपिड माइल का इंट्रोडक्शन। इट्स अ पायनियर इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनिंग एंड दिस इज अर्लियर नोन एज गोल्डन इंस्पिरेशन। अब इसको रैपिड माइल के नाम से जाना जाता है। 20 साल से है। जब सीक्रेट मूवी या बुक नहीं लॉन्च हुई थी तब से है ये इंडिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग और वर्कशॉप्स करते हैं और लोगों को सिखाते हैं इसके बारे में। सो वी आर 6 trainers here. Obviously Shaz is heading this company and Shaz is a trainer of success and law of attraction. Then comes Anila Damodarji, she is also trainer of law of attraction. Balram sir, so नाम से ही समझ में आता है हम सब उनकी कितनी इज्जत करते हैं। बलराम सर, so Balram sir is, you all know, he is a world famous yoga practitioner and preacher and सेवक है सबसे अधिक, अगर उनका सही वर्ड इस्तेमाल किया जाए। देन कमर सर ने अभी रिसेंटली हम लोग को ज्वाइन किया। सो वी आर सो प्राउड। उनकी काफी बुक्स और पहले हमने जो वर्कशॉप्स अटेंड करी गोल्डन इंस्पिरेशंस की या रैपिड माइल की, तो उनकी बुक्स, डीवीडीज वो सब हमको मिली थी कुछ सीखने के लिए। उसके बाद संजीव मिश्रा, मैं मेनली मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड माय फोकस इज ऑन मनी एरिया। सो लोग मुझे मनी कोच या मनी अट्रैक्शन कोच भी कहते हैं। फिर निहारिका ने ज्वाइन किया। शी इज अ सर्टिफाइड जैक कैनफील्ड सक्सेस प्रिंसिपल्स ट्रेनर। शी अभी वो कहीं उनके फैमिली के इश्यूज की वजह से प्रॉब्ली शी विल ज्वाइन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टुडे सेलिब्रेशन। एंड देन लेटेस्ट अभी हमको ओंगिर जिन ने ज्वाइन किया, क्योंकि हमें लगा डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ज्वलंत विषय है। लोगों को इसके बारे में जानना सीखना अब जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि लोग ऑलरेडी रेगुलर जॉब वाले स्टाइल से निकल के एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं। तो उनको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। तो शास के फ्रेंड सर्किल में थे और कीन थे लोगों को सिखाने के लिए, तो ही हैज आल्सो जॉइंड। तो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन। अब मैं सबसे पहले, किसी भी बर्थडे पार्टी में जब गेस्ट आ जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? एनीबडी कैन गेस? केक कटता है। केक कटेंगे आज, वर्चुअल केक कटिंग। सो नहीं, ये मेरे लिए रियल है। आई एम सो लकी लकी, मेरे लिए रियल है। ऑब्वियसली हम सब अभी इस मॉल में मिल नहीं सकते, तो यू विल सेलिब्रेट फ्रॉम योर प्लेस। So Sanjeev has been very nice to arrange a real cake for us. So I hope मेरा वो स्क्रीन मुझे नहीं दिख रहा। केक सबको विजिबल हो रहा है? Yes, we can very see clear, that. very clearly. Everybody can pin it. We want to see the real cake. तो वो YouTube Yellow लिंक color दिख रहा cake. है। YouTube दिख रहा है। Charles, can you see this or not? Yes, I can see it. I can see you lighting candles. So let us celebrate. आप एक बार अपने हाथ में लेके दिखा भी दीजिए अपनी वाली स्क्रीन पे, so that everybody can. Oh, very Wow. Now everybody can. Great. Happy birthday MMC. Happy birthday, MMC. Happy birthday, Manju. It looks so nice. Very tempting. मुंह में पानी आ रहा है। इसको खा के बलराम सर का योगा और करना पड़ेगा। ज्यादा खा लो, कल से वापस चालू हो रहा है कार्यक्रम।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Evan. Happy birthday I think the liberty to आप Evan. सबकी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे हम सबकी तरफ से आप खाली हैं Happy birthday to Midweek. So, thank you all for your wishes and thank you for being here on this day. पाइनएप्पल है ना ये? कुरियर करूं? नहीं मैंने खाया तो ओरिजिनल लग रहा है, एकदम ऑथेंटिक पाइनएप्पल लग रहा है। ऑथेंटिक पाइनएप्पल। तो आज के ओकेजन में हम लोग मेनली सेलिब्रेशन रखेंगे एंड लेकिन हम चाहेंगे कि ट्रेनर्स अपना एक्सपीरियंस या जो भी वो शेयर करना चाहते हैं वन बाय वन फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट दे वांट टू स्पीक फ्रॉम देयर हार्ट। सो सबसे पहले नन अदर देन बलराम तरेजा सर। थैंक यू संजीव भाई। कमरुद्दीन, सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं मैं। आई एम सीइंग यू बट आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज यू, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। My journey of 31 years. Good evening, sir. Very good evening. My journey of 31 years. For the last 1 year, rapid mile, I can definitely say that it has added miles to my journey rapidly. Not only that, this whenever I read Midway Magics and MM, I always take it as magics and miracles. Whatever the sessions I have been conducting through different platforms here, I have got a wonderful experience of this. I can never ever forget that because of rapid mile in the 1 year that I have achieved. It is really, really outstanding. Now I have to talk on what is out is within. The outer world is the reflection of your inner world. Inner world is the world of thoughts, feelings, vibrations, attitudes, and all the time, this long career of counseling the people worldwide, I always ask them to change the life from within. And I've seen that whenever I take very complicated situation of my clients, that day I particularly and especially meditate for more time, just to be in a very inner conscious stability, mode of absolute serenity, and rather I can say the absolute peacefulness stage. See, whatever we want to control from the things outside us can never be controlled. Because the frequency outside, which is the frequency of problems, challenges, situations, circumstances, that is not the frequency of solutions. The frequency of solution always decides from the inner consciousness. Law of consciousness also says the outer world is nothing but the reflection of your inner world. If you want to change the things outside, maybe the people, situation, circumstances, is it like looking into the mirror? If you got a boil here on your cheek, you're applying the ointment on the mirror and thinking that I'm going to correct this. It will never happen there. One more thing I like to add it over here. The love and affection that I have been getting from this platform of Rapid Mind and Midweek Magics, I conducted about 4 months times
4 months pranayam session on pranayam, and after that we out of that about 50% were there from Mumbai city. We met at one place thrice in a period of 1 month's time. The affection, the love, the cooperation, the caring, you can see the attachment that we got connected under this rapid mile. It has really given me and you can say amazing and yeah, I can definitely say that the experience that I've got by teaching it over here, what I've learned in my teachings, I could never learn in my life. So I'll once again congratulate and tell the people, those who have joined us and who are already on this Midway Magic group, please never ever leave this group. There are always the highly enlightened with a higher consciousness. All the trainers come to impart their teachings and to see that you always grow in your consciousness to make the life much more better, because the things outside are quite challenging on the days to come ahead. Once again, before I hand over the things to Sanjeev Bhai, once again I congratulate from the bottom of the heart to all the trainers, to all the participants, and because of you participants, we are always growing. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू बलराम सर। थैंक यू बलराम भाई फॉर शेयरिंग। काफी अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत अच्छा मैसेज था, हम सभी के लिए था। तो आज सेलिब्रेशन के मौके पे मैं अपना फेवरेट काम करना चाहता हूँ, यानी अपनी स्टोरी सुनाना। तो कितने लोग यहाँ स्टोरी सुनने आए? तो मैंने सोचा कि मैं मिडवीक मैजिक क्लब की ही स्टोरी सुनाऊंगा। पुरानी स्टोरी तो शायद आपने सुनी होगी, उसके बाद की स्टोरी सुनाऊंगा। तो मैं ये स्टोरी स्टार्ट करूंगा अगस्त 2020 से। ये वो टाइम है जब मैं जॉब से रिजाइन करना चाहता था, मई जून का, बट श्योरिटी नहीं आ पा रही थी क्योंकि हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे थे टू क्रिएट द अल्टरनेटिव इनकम स्ट्रीम। तो अचानक हम ढूंढने लगे कोई ऐसा सिस्टम मिल नहीं रहा था, जबरदस्ती खुश हो रहे थे, और अल्टीमेटली मई एंड में हमको ये लगा कि अब ये नहीं होगा और अब जॉब ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पहले लॉकडाउन चल रहा था तो हम वर्क फ्रॉम होम थे। तभी अचानक अर्चित ने फोन किया कि ऐसे ऐसे कोई ट्रेनर मिली है और स्मिता पटेल, और वो ऐसा सिस्टम बताती है कि आप 15 मिनट काम करके और दिन भर के लिए फ्री रह सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ मुझे समझ में आया, जब उसको देख लिया और उस सिस्टम को हम पसंद करने लगे और उनके बड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमने ज्वाइन कर लिया, तो जब मैंने कनेक्ट किया डॉट को, तो मुझे शायद की वो लाइन याद आई कि जब आप किसी चीज को ढूंढते हैं तो वो चीज आपको ढूंढने लगती है। तो हम चूंकि ढूंढ रहे थे एक ऐसा सिस्टम, तो हमको वो सिस्टम मिला। पेन पॉइंट तो जॉब ही था, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन में जो भी और अल्टरनेट इनकम स्ट्रीम थी उसको थोड़ा सा सैबोटेज किया था, तो एक कंफ्यूजन आ गई थी। बट उस समय जॉब में कुछ ऐसा हुआ जो बहुत इंसल्टिंग लगा, बहुत पिंचिंग लगा। अस्मिता पटेल हमारी जो मेंटर थी, उनका सिस्टम पसंद आ गया था। हमने कहा चलो देखी जाएगी, हमने रिजाइनिंग का नोटिस दे दिया। बाद में जब मैं सोचता हूँ तो ये शायद यूनिवर्स का इशारा था कि तुम ऐसे नहीं डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि जो सिक्योरिटी का दिमाग में सेटअप बना हुआ है वो नहीं टूट रहा है। तो मैंने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी। यहाँ से मुझे सेकंड मैसेज मिला। अभी भी अब जॉब रिजाइन कर दिए थे, थोड़ा सा डायलेमा चल रहा था माइंड में कि क्या होगा, क्योंकि वो सिस्टम नया नया सीख रहे थे। तो मैं जिस डिपार्टमेंट में था वहां पे मेरे एक्स कलीग आए जिन्होंने वीआरएस लिया था, मतलब यंग एज में उन्होंने भी रिटायरमेंट लिया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो आप अल्टरनेट इनकम के लिए, ऑलरेडी रिलीव हो चुके थे। तो ही सेड की स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने अपने फ्रेंड अनुराग को बताया, तो अनुराग ने पूछा यूनिवर्स का और क्या तरीका हो सकता है ये बताने का कि तेरा रास्ता सही है। तो यहां से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, फिर सीखने लगे, कॉन्फिडेंस आने लगा, लेकिन इतना नहीं आया था कि जितनी इनकम चाहिए वो आ जाएगी। बट अब बर्न द ब्रिज हो चुका था। थिंक ग्रो रिच अगर आपने पढ़ी हो तो वो बताते हैं बर्न द ब्रिज। अगर आप पुराना रास्ता बंद कर देंगे तो अपने आप नए रास्ते में जीत ले आएंगे। तो हमारी जो मेंटर थी वो हमेशा बोलती थी कि फंड्स लेके आओ तभी अच्छी ट्रेड होगी। बट उस समय जितनी हम ट्रेडिंग कर रहे थे, शायद ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आया, बट स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो उसके हिसाब से हम समझ नहीं आ रहा था कि फंड्स ज्यादा लाके करेंगे क्या, मतलब इनफ है। तो नवंबर एंड आते आते उन्होंने कई सारे सिस्टम्स हमको सिखाए थे। तो उन्होंने जो लास्ट सिस्टम हमको सिखाया वहां मुझे पैसा दिखा। वो पैसा
जो मेरे को आगे फ्रीडम दे सकता था। दिखा, मैंने अर्न नहीं किया, दिखने लगा। जब वो दिख गया तो मुझे वो फंड जो मैं अभी तक अरेंज नहीं कर पा रहा था, थोड़ा किया था, उतना नहीं, वो दिखने लगा आसपास। तो फिर वही चीज हुई, जब आप चीज को ढूंढने लगे, जब आप उस चीज के लिए रेडी हो गए, रिसीविंग मोड में आना शुरू हो गए। जब तक आप रेडी नहीं होंगे किसी चीज को एक्वायर करने के लिए, तो आप उसको रिसीव भी नहीं कर पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली चीजें दिखने लगी, और हम और अर्चित को ऐसा लगा कि यार पैसा तो था, अब तक दिख क्यों नहीं रहा था, ये तो हमारे पास था, हम इसको यहाँ डाइवर्ट कर सकते थे। और हमने किया, और फिर धीरे धीरे यहाँ पे हमारी जो मेन, आज मैं कह सकता हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। तो जो मेन चीज हमको यहाँ पे, जिसने हमको टिका के रखा, वो थी फेथ। फेथ यूनिवर्स पे कि हम कर ले जाएंगे। इट इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट एंड गाइड। वो ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि मोस्टली सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही होता है। हम कह तो देते हैं, हमने सुना है, हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, पर वो एक्चुअल फेथ नहीं आता अंदर से। यहाँ मेंटरशिप की वजह से हमें वो फेथ आया, और मार्च तक ठीक ठाक पैसे कमा लिए और कॉन्फिडेंट हो गए। और लेकिन मैं साथ साथ 2-3 चीजों में इन्वॉल्व था। मतलब मेरा अपना जो पुराना सोर्स ऑफ इनकम था, जॉब के अपार्ट, वाइफ का हेल्थ का क्लिनिक, ट्रेनिंग को भी मैं एज ए इनकम पोटेंशियल के रूप में डेवलप करना चाहता था। तभी फिर निहारिका की ट्रेनिंग अटेंड करने को मिली, जो सक्सेस प्रिंसिपल्स की थी। फिर मैंने ऑल नाइटिंगेल को सुना, जो थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में बताते हैं। तो वहां से मुझे लगा कि जो मैं तीनों चारों चीजों पे चल रहा हूँ, तो शायद मैं उतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर मैंने 2-3-4 महीने फोकस किया सिंगल एक काम पे, और करीब मेरे ख्याल से मई ऑनवर्ड्स हम एकदम, आई एम सॉरी, मतलब एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं ट्रेनिंग वाले से भी ऑलमोस्ट डिटैच हो गया था। तो आप लोगों ने भी फ्रिक्वेंटली मुझे नहीं देखा होगा। करते करते जुलाई आ गई, और मुझे लगा कब तक यार, कब तक गोल को अचीव करना है करते रहेंगे। तो जुलाई एंड में मैंने डिसाइड किया कि जो भी मेरा गोल है अब वो होना चाहिए। मतलब इट्स नॉट कि मैं लोगों को बताऊं कि मेरा गोल है, अब मुझे बताना है कि मेरा गोल अचीव हो गया। हमारा ट्रेनिंग कोर्स खत्म हो चुका था, अब हमारी मेंटरशिप कुछ भी नहीं हो रही थी, हम इंडिपेंडेंट थे और कुछ गलतियां भी कर रहे थे, बट नेट नेट ओके चल रहा था। एंड यू विल नॉट बिलीव, जिस दिन मैंने डिसाइड किया, अगले दिन मेरे मेंटर का फोन आता है, क्या कर रहे हो तुम लोग आजकल? विद इन 15 मिनट्स आई वांट यू, अर्चित एंड अभिषेक ऑन जूम कॉल। उन्होंने हमसे पूछा आप लोग क्या कर रहे हो। शी नोज कि हम लोग अच्छे फ्रेंड है, तो उन्होंने इकट्ठा हमको बुलाया, एंड शी सेड कि नहीं, जो कर रहे हो ठीक है, बट उतना नहीं है जिसके लिए तुमने जॉब छोड़ी थी, तुम ये कर सकते हो। और उन्होंने हमको बहुत सारी एडवाइस दी, और विद इन 2-3 डेज हमने उस एडवाइस पे इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि उनका हमेशा कहना था कि जब बड़ा फंड होगा तो आप बड़ा पैसा अर्न कर पाओगे। तो शी सिंपली एडवाइस कि तुम तीनों अलग अलग ट्रेड मत करो, यू कंबाइन योर फंड एंड इंक्रीज योर बेस। और ये अगस्त 16 से हमने उसको कंबाइन किया, एंड वी हैव गॉट अ वेरी 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 गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दैट। अब वो गोल मेरा मैक्स टू मैक्स 1 मंथ दूर है, जहां से हम वो कंसिस्टेंसी ला पाएंगे। तो ये जर्नी रही मेरी। और फिर शायद से बात तो होती रहती थी, टच में थे अनिला, शाज, जब भी कोई क्वेरी आती है, क्योंकि ऐसा नहीं है स्ट्रगल हम भी करते हैं, हम भी लो होते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो यही लोग हमारे मेंटर हैं। फिर इनके पास जाते हैं, इनसे सवाल करते हैं, इनसे जवाब मिलता है। तो टिके रहे, फेथ किया, यूनिवर्स ने गाइडेंस दी, उसको समझा, जिस चीज को ढूंढा वो आके मिल गई। यही मेरी 1 साल की स्टोरी थी। एंड अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। Great achievement. तो मैं चाहूंगा कि शाज कुछ बोलना चाहिए सेलिब्रेशन के मौके पे। Thank you, Sanjeev, for sharing such a nice story, and it's an inspiring story for me as well. And Sanjeev is actually a mentor for me in the stock market trading. So, what I feel good when he achieves his success. So, because I'm also on the same path. So, अगर एक कॉन्फिडेंस आता है जब संजीव ने कर लिया तो मैं तो कर ही लूंगा।
तो संजीव को उस दिन मैं बता ही रहा था कि स्टॉक मार्केट में मैं बस दो ही लोग ही सुनता हूँ, एक मार्क डगलस हु इज वन ऑफ द स्टॉक गुरुज इंटरनेशनली फेमस हु इज नो मोर, एंड द अदर वन इज संजीव मिश्रा. तो जो भी एडवाइस देते हैं एंड आई फॉलो देम सीरियसली. थैंक यू संजीव. Okay, my today's topic is an interesting topic, and it's related to intuitions and how intuitions are our divine guidance. Uh, Intuitions कुछ साल पहले मेरे लिए बहुत ही नई चीज थी. I'll say almost 18 years back. When I was working in a corporate job, I was completely a corporate kind of a guy. कि सुबह से शाम तक की job and meetings and leading teams and meeting targets. बस वही था मेरे लिए life. One fine day, my brother calls up, and that time I was working with in Jaipur with a company called Genpact. So he called me, ke, come to Delhi and attend this workshop. And I actually asked him, is this so important that actually I should come from Jaipur to Delhi and attend this? He said yes. And this workshop was called Silva Ultramind Workshop. It's one of the most famous mind power and intuition development workshops I've come across in the world. So this was one of its kind workshop. I've never gone through anything similar to this, and it was a 2 day workshop. मेरे लिए बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था. I went through almost 12 meditations in 2 days, and this was for a person who never used to do meditations. Probably once in 10 days or once in 20 days I used to do a meditation, but 12 meditations in 2 days was a mind-boggling experience for me. And by the end of 2 days I was in a totally different situation where I had a severe headache. I did not know what to do. It was more of a trance mode. And my trainer instructed me, and she was Anneke Revolt, who is also the founder of Golden Inspiration. So she instructed me that you should continue with your meditations, do not stop them. And one thing I'm very good at it is if I make a commitment, I definitely do it. So 15 days I committed to myself I would not miss even a single day. And I had a severe pain in all these 15 days. And why the pain was there, I later found out that my muscles were dormant, my brain muscles were dormant. So normally what happens is when you go to gym and when you lift weights, तो आपके हाथों में दर्द होता है. Okay, why दर्द होता है? क्योंकि वो मसल्स आपकी काम नहीं कर रही थी, आपने उनसे वर्क लिया है और वो अगले 2-3 दिन तक पेन करती हैं. Similarly, my brain muscles were dormant, and I used them. I meditated so much, and meditation were not normal meditation. These were active dynamic meditations. Okay, so I continued doing these meditations for 15 days without knowing what would happen, just kept following the instructions. And the actual miracle happened on the 15th day itself. On the 15 days, I started receiving intuitions. I started uh, noticing signs. I started somebody from the thin air speaking with me, giving me guidance. And in fact, that guidance actually saved my life a couple of times. And then I realized the importance of intuitions and how important they are in our lives. And once we start receiving those intuitions, those confusions, those fill in the blanks from lives are completely gone. When you have to make those decisions, कि ये करेंगे, should we pick the path A or path B? Should we invest in this investment or the other investment? You just have to close your eyes and follow your intuitions. This was a journey which started almost 18 years back. But for last 17, 18 years, I felt, okay, I have received intuition. Now what? Up to this level pe aa gaya main. But I also had heard from so many times that your intuitions get stronger in nature. Okay. But I really did not experience that thing. Okay. Until last month, not last month, but this month, when I went to Ranikhet, and I was there for a long trip of almost 8 days there.
and I was sitting in my resort in the middle of the jungle uh, with raining clouds floating in the air. In fact, I was feeling that I'm actually sitting in the clouds itself because clouds were all around and it was drizzling as well. And then I experienced this thing which I always wanted to experience, that your intuitions get stronger when you are connected to nature. And this was the moment where I realized I have grown to the next level of intuitions. Suddenly, I started getting ideas, I started receiving those divine guidance, and I was simply sitting in the jungle uh, on a swing at 11 o'clock at night and enjoying and smiling to myself that this is the life I had always been looking for. And this is the thing which I have kept wondering how it feels when you are in the nature, surrounded by nature, and connected to nature. Okay. So this is the experience I wanted to share. Thank you very much for listening. थैंक यू श्वेता. इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि आपने ये एक्सपीरियंस हम लोग से शेयर किया था नेचर वाला ड्यूरिंग सम सेशन. तो ये एक हमारे लिए भी नई Thank you. लर्निंग थी. थैंक यू फॉर शेयरिंग. सो who's next? So none other than your beloved Anila ma'am. Ma'am, Thank you. Anila ma'am ne just called me Anila, but thank you for that very sweet intro. For those of you who don't know me, my name is Dr. Anila Damodar. I'm a medical doctor, I'm an ophthalmologist. And many times people ask me, medical doctor teaching law of attraction? And I say yes, because really, until now, as an ophthalmologist, I was teaching people, or not teaching rather, I was helping people to see their world clearly, their outside world. But I'm very proud that over the last 10 years, as I have been involved with Golden Inspiration First and now Rapid Mile, that I am helping people to develop the vision to look within themselves and to open up their internal eyes. So I'm very proud to be a part of this team, and also I have been a part of this team for many years. It has been the most joyful, interesting and sometimes very rough journey. तो आज क्योंकि सबका मूड है कि हम अपनी कहानी बताएं, अपनी जर्नी बताएं, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा a little window I will open about my own journey. Okay, so here it is. बहुत किताबें पढ़ी, बहुत, मतलब जितनी मेडिकल किताबें पढ़ी हैं मैं सोचती हूँ उससे ज्यादा मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें पढ़ी हैं. Just about every author, you name it, I have read it. चार्ट लिया, जैसे बोलते थे मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर सुजाता हो तो समझ जाएंगे, चार्ट ली वो किताबें कवर से कवर. फिर सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए, one after the other, workshop upon workshop upon workshop. I kept attending, taking notes. Wow, lost it. Then you must have heard of Vishen Lakhiani, Mind Valley. He runs beautiful programs online. I registered for all of them. I used to attend everything. Again, lots of notes, lots of things to learn. As you must be getting the idea, knowledge kattha karti gayi. I just collected the knowledge, just kept collecting it. You know, I invite you all to my house. You'll see those big files of notes sitting over there. I honestly will tell you that for a few days, I used to get wonderful results. I used to feel very good. I've read this book. I know so much. And sometimes I used to get some nice little manifestations. Just things used to show up in my life for a little while. And then after a little while, just like everybody else, lazy ho jati thi. I just get lazy. I would not do those things. And somehow all that knowledge used to start collecting dust. Kal karenge, parson karenge, koi baat nahi, next week I'll start all over again. That's how it became.
until I started creating and manifesting some very painful situations. Because what I noticed was that what I was learning mostly was what I should not do. And I kept focusing on what I should not do, and I kept doing that. And as I did that, life just went like this. In all departments, financially, relationships, health. It looked like darkness all around. But as Sanjeev ji often says, na, you've heard that story that Sanjeev says na, about the dog. It won't move until something pokes it enough for it to cause pain. I reached that place. And so I pulled out all those notes again, dusted them off. And I read one thing and one thing again and again and again. Simple little things that I had to do. Not collect knowledge. No, nowhere it was written, go and collect knowledge. It was written, do certain things again and again until they become habitual practices. And so then I started. मैंने बोला बहुत हो गया, enough. Life is not supposed to be like this. Meditated every day. Simple meditations. Started affirming. Started visualizing. And most of all, started expressing gratitude for the blessings that I had at that point in time. I promise you, sounds very small, na? It is very small. But as you start doing these things, something very deep changes inside. And that is your own perspective, your own mindset. And as that started changing, life started changing on its own. Just like how Balram sir just now said, as within, so without. I started changing my life for the better. हर चीज ठीक होने लग गई. Very quickly, much faster than how it had gone down, it started going uphill again. And that really was the intent of starting Magical Mornings. Okay, if something could help me so much, why not reach out to others who would also like to practice these things? You know, at first, when Magical Morning started, it was December 1st. It was supposed to be only for 21 days. We had about 6-7 people, but 6-7 sincere people who used to show up every single morning. And we did just simple things together. Meditate, visualize, affirm, express gratitude. Very quickly, that number started expanding. We were triple in size, you know, before 2 months, we had tripled in size. But more importantly, what we started feeling, what we started experiencing is what changed it all. We all started feeling good, started feeling better. Almost every day, almost every week, almost every 2-3 days, we'd hear stories of how magic and miracles started coming into our lives. किसी की health improve हो रही है, किसी की financial situation अच्छी हो रही है, somebody's manifesting large amounts of money, somebody's relationships are healing. It just started becoming amazing. So that, my friends, is the secret. You know, knowledge, including the law of attraction, spirituality and knowledge about the law of attraction is just that. It's only as good as how much you apply it or implement it. Otherwise, वो knowledge जो है ना, it will sit in the shelf, collect dust, and be forgotten. Now, I'm not saying knowledge is bad. No, it is important to know your fundamentals. It is important to understand them. But after that, the key is really to apply that knowledge every day
in every aspect of your life. And it all comes alive for you. Thank you. That's my journey. मैं सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो इट्स नॉट अबाउट नोइंग, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग. तो जब अंदर से अंडरस्टैंड हो जाता है, एंड टेक्स प्रैक्टिस practice and to connect the dots, to collect the data from your own life so that you can keep faith on it and keep on moving. So thank you all the trainers. And now हमने तो अपनी बहुत बात कर ली, अब उन हीरोज की बात करते हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है या हो पा रहा है या चल पा रहा है. तो वी वुड लाइक टू टेक दिस ओकेजन, प्रिविलेज लेना चाहते हैं अपने इंस्पिरेशंस को एक्नॉलेज करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए. उनकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ने का मोटिवेशन रहा हमेशा. So we are going to acknowledge some of our inspirations. So the first one comes is Mr. Bhaskar. Mr. Bhaskar inspirations थे शाद और अनिला के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप लॉन्च करने के लिए, और भी उन्होंने काफी सारे इम्पोर्टेंट इनपुट दिए. तो मिस्टर भास्कर देयर, अगर वो है तो प्लीज कैमरा ऑन करें. I think Bhaskar could not join, but he would definitely listen to the recording. Yeah. Thank you, Bhaskar, for planting that seed. We never used to do online training. It was Bhaskar's ideas. लाइफ में जितना हम कर सकते हैं, बाकी our heart knows how much we love you and respect you. Then comes Aarti, most consistent. You can be seen in every workshop. Inspires us to learn and give. Aarti is there. Bharati is out of town today, but I know she will hear the recording. But she joined in the starting. Yes, she had She logged off. another function, yes. Okay. Then Juhi from Gurgaon. मैंने उनका नंबर ऐसे उनका ये रहता है कि मम्मी सब बोलती है, लर्निंग्स को बताती है, लोगों को इंस्पायर करती है, और कुछ भी जैसा भी उनके डिफिकल्ट टाइम्स रहे, whenever possible, it's very very consistent. It's also seen in all the workshops on rapid life. Thank you, Juhi. Thank you. Thank you, Juhi. Oh, thank you so much. I could barely hear. I know you're talking about the music in the background is very loud. Okay, let me reduce that. तो जूही, आई वाज जस्ट टेलिंग कि आप हमेशा बोलते रहिए, सपोर्ट करती रही, अपने अपने इंस्पिरेशन से दूसरों को इंस्पायर किया, लोगों को इंकरेज किया, और सारी वर्कशॉप में डिफिकल्ट टाइम्स के बावजूद अवेलेबल रही और सीखती रही. आपकी वजह से हम देखिए इंस्पिरेशन. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. Thank you so much for kind words. Thank you. देन सुरेंद्र सर फ्रॉम ऑड टाइम्स में, ऑड आवर्स में, और इतनी कंसिस्टेंसी, तो इट्स लाइक ना उम्र का सीमा हो ना टाइम का हो पन्ना. तो रियल हीरो. थैंक यू सर फॉर बीइंग सो कंसिस्टेंट. Thank you, Sundarji. Thank you, Sanjay, for saying that. Honestly, it's a pleasure to be here. And if you give me 30 seconds, I have something I want to share with you. Yeah, please. Sure, please. It's like this, that Dr. Anila is our MMM, and she is HHHH. I'll explain later what it is. And we LLL. So Dr. Anila is our magical morning mentor. Thank you. And she is humble, happy, honest, highly educated, and hardworking. And we, LLL, we like her, we love her,
and we learn from her every time. Thank you. Thank you, Surinder ji. That's amazing, Surinder. Thank you so much. Before you go ahead, Balrai, I'd like to say Thank you. one thing about Surendra bhai. Surendra bhai, सुन रहे हैं ना मुझे? Yeah. See, I was watching you. I have been watching you all the time, and I could see today also. You are always enthusiastic and passionate to know who is saying what. That shows a great quality of a participant, and we are truly grateful to you and happier being you as our part of this rapid mile as a mid magics. Thank you very much. Thank you. Like I said, it's a pleasure to be here, really. I have attended at least, I would say, 1 or 2 sessions from each trainer, but mostly been connected with the Magical Morning. So, thank you. Thank you so much. Thank you. And Dr. Sujata, she has genuinely tried to be here, to learn from here, although she is very busy. She is a frontline doctor in the COVID situation and all that, facing so much negative situation in her environment. And also she decided and she always tried to be here and learn and implement. Congratulations and thank you, Dr. Sujata. Thank you, Dr. Sujata. And keep it up. Thank you, Dr. अब 2 लोग का नाम एक ही साथ लेना चाहिए, ऑल्दो मैंने देखा एक को मीटिंग छोड़ के जाना पड़ा। रवि नायर और नानावती सर, उनको अलग नाम लेने की जरूरत नहीं है। इंस्पिरेशन दे रहे हैं, इतनी अच्छी दोस्ती रखने का, साथ साथ हर वर्कशॉप में आते हैं, इतने ओपन टू लर्निंग है, इतने अच्छे इनपुट देते हैं। तो इन दोनों को हम एक्नॉलेज करते हैं, बीइंग यंग एट हार्ट and always being there for us. Thank you, Nanavati ji, and thank you, Ravi Nayak sir. Thank you, Ravi. Thank you, Maharaj. Thank you, Bharatji. Thank you, Raviji. One word, just a word from here. It is my proud privilege that I am under the authority. A great thank you for Rapid Mile and Magical Mornings, Money Minting program and Balram sir's yoga program. It is my privilege and proud that I am under this umbrella and I have been able to achieve so many good things, and we have been sharing with good friends, and in the morning we met good friends early morning at 6 o'clock. And this is the only way, we can start our day and our journey throughout the week. And this makes our life so easy during the pandemic situation. And maybe Rapid Mile has been launched during pandemic situation, wherein it was the most apt program to start, because people don't meet each other because of pandemic and lockouts. So we see cheerful faces in the morning. That makes our day. Thank you so much. Yes, one word I have to say. One word I have to say. Bharat Bhai and Ravi Nair, both are retired with us, but I find both of them the youngest learners with us. A big clapping for them. Thank you. एक सज्जन की बात किए बिना हम आगे ही नहीं बढ़ सकते, जो फिजिकली अब हमारे बीच में नहीं है, but we always feel him whenever we are delivering. We can see him there. So some people can guess his I name. just thought of him a few seconds back. So it's difficult. Exactly, I just thought of him, and I was sure that somebody will mention him just right now. Yeah, it's difficult to talk about him because गला भर जाता है, आंख में आंसू आ जाते हैं, विश्वास नहीं होता है, बट ठीक है। उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया, बहुत प्रेरणा दी, हमें हमेशा टोज पे रखा। उनके क्वेश्चंस बहुत जेन्युइन होते थे और उनके आंसर्स ढूंढने के लिए हमें एक्चुअली मेहनत करनी पड़ती थी, बट उसकी वजह से वो क्वेश्चंस अनकवर हुए और हम उन्हें आंसर ढूंढ पाए। लॉट ऑफ रिस्पेक्ट
wish him all the happiness he can see us. We believe that he's always there with us. उनके acknowledgement के बिना तो midweek magic session है ही. And then सबसे ज्यादा मैं आभारी अपने ट्रेनर भाइयों का हूँ, ट्रेनर बहन का हूँ, मैम अनिला मैम का. इतना हार्ड वर्क, इतना बिहाइंड द सीन्स है इसके पीछे, लेकिन हम एंजॉय करते हैं. एंजॉय करते हैं जब हम बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे होते हैं. हमें मजा आता है डिस्कस करने में. व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें, क्या सीखा, क्या बताएं. और आप लोग के बिना ये तो जर्नी हो ही नहीं सकती थी. तो सब ट्रेनर्स को हैट्स ऑफ एंड सभी पार्टिसिपेंट्स को हैट्स ऑफ. एंड इसके साथ आई थिंक हम आज का सेलिब्रेशन सेशन को समाप्ति की तरफ ले जाएं. That information yeah, I just wanted to inform that probably आप लोग को पता होगा our next upcoming workshop है law of attraction की. जिन्होंने नहीं अटेंड किए वो रजिस्टर करें, जिन्होंने कर लिए वो रिपीट करें. दिस इज माय रिकमेंडेशन. वो कंटिन्यूअस फेज बना के चले, वो हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी. और हर टाइम तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि हर टाइम आपको कुछ ना कुछ नया ही मिलता है. और उसके साथ हम इसको एंड की तरफ ले जा सकते हैं. बट क्या मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि हम सब सेलिब्रेट मिलके करें, वीडियो ऑन करें, एक अच्छी म्यूजिक पे थोड़ा सा डांस करें, एंड देन वी विल से बाय. So I request everybody to put the cameras on. Just show us you are also celebrating this. We really need that appreciation and motivation from your side. Yes, Shaz. All right, so we'll dance on the happy song. I hope आप लोग और हम लगातार मिलते रहेंगे. जस्ट रिमाइंड कराना चाहता हूँ, मिडवीक मैजिक सेशन हमने शुरू किया था मिडवीक मैजिक क्लब लास्ट ईयर से. मिडवीक इसलिए का नाम दिया था क्योंकि मिडवीक में होता है, और क्लब इसलिए दिया था क्योंकि ये लोगों का क्लब है. और मैंने कहा था मैजिक वर्ड क्यों डाला है, ये आपको कुछ समय में समझ में आएगा. तो कितने लोग को कुछ समय में वो मैजिक वर्ड दिखाई दिया इस क्लब में आते रहने के बाद? Yes, right from the first session which I have attended. तो वो सस्पेंस अब खुल चुका है कि वो मैजिक क्यों है, वो एक्सपीरियंस करने वाली चीज है. थैंक यू अगेन एंड अगेन फॉर बीइंग हियर. एंड नाउ इट्स टाइम नेक्स्ट वीक मिलते हैं 7:30. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you all for being here and joining in our celebration. Wonderful. You are all Rapid Mile. And thank you for always being Bye-bye. there, answering every question, no matter how stupid it may sound to everyone. But each and every question has been answered, and
All of you have been phenomenal. There are no words to describe the tenacity, the grit, the determination, everything that comes from all of you. It is unbelievable. And when you say that Fortune Nursing is also seeking you, I think you all were seeking people to join, and we were seeking people to guide us. So I don't think it's just a coincidence. It's literally a divine intervention that we all are here together, and that you all have, that all of you are like binding threads for all of us. So thank you so much for being there. Lots of luck, lots of success, and may all of you go from strength to strength. Thank you, Thank you Juhi. so much, Thank Juhi. you. Thank Thank you. you, as always. Thank you. Yeah, always. Thank you Thank, all. thank you, and all the best. Thank you so much. Thank you. Happy birthday again, Rapid Mind. Thank you all. Thank you, Dr. Sujata.